welcome back to Class of Learning. We are with Rahul Sharma, your friend and guide. And today we are going to discuss grandfather work of Jayant Mahapatra. आपने कहा जयंत महापात्रा के काम को वर्कआउट करना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर को डिस्कस करना है. As there are lots of messages on my WhatsApp and on your YouTube guys, यहाँ पे मेरे को डिस्कशन के लिए बोला जाता है सर प्लीज आप ग्रैंडफादर को एक बार एनालाइज कर दो, एक बार ग्रैंडफादर की डिस्कशन करें, क्योंकि ये ऐसी पोएट्री जो सीरियसली समझ नहीं आ रही. तो व्हाई टू वर्क आउट दिस और पोएट्री क्या पेपर के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है? यस, दिस वन मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट्री ऑफ जयंत महापात्रा. आपने कहा यहाँ पे समझना जरूरी है कि ग्रैंडफादर में एक्चुअली ऐसा क्या है जिसके लिए हम सब इतनी ज्यादा डिस्कशन की बात कर रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. उसके बाद पता लगेगा लेट व्हाट वी नीड टू वर्क आउट. हमें क्या करना है? पहले द पॉइंट इज ऑल अबाउट जयंत महापात्रा एक्सपीरियंस व्हाइल ही रीड द डायरी ऑफ हिज ग्रैंडफादर. सर द डायरी ऑफ हिज लेट ग्रैंडफादर, जहां पे डायरी की हालात बहुत ही खराब है. इट इज येलो टेंस कंप्लीटली डायरी डिस्ट्रॉय स्टेट पे, वहां पे उसको लेके वो पढ़ रहा है. एंड ही गेट टू नो व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस वेयर हिज ग्रैंडफादर हैड टू चेंज हिज ओन रिलीजन. कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले शुरू लेके आखिर तक पोएट्री निकालें और अपने सामने रखें. एंड एज आई एम गोइंग टू रीड द पोएट्री यू टू नीड टू रीड इट. उसके बाद रिसाइट करेंगे और कई डिस्कशन करेंगे जो हमें हेल्पफुल होती है, तो डेफिनेटली हम उसको नोट डाउन करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास. पहली चीज हम डायरी की बात करते हैं. दैट्स डायरी बिलोंग्स टू द ग्रैंडफादर. तो यहाँ पे पोएट्री का नाम ही ग्रैंडफादर्स डायरी दिया गया. So here we have the yellow diary notes. I repeat, the yellow diary notes whisper in a vernacular. They sound the forgotten posture. They sound the forgotten posture. The cramped cry for the forces mean to hear that voice. I repeat that statement, that is really important. The cramped cry that forces me to hear the voice. Now I stumble back in your black page break. In your black page break. What did they mean? यहाँ पे ग्रैंडफादर के उन बेसिक सर्कमस्टेंसेस को डील किया गया जहां पे आदमी को जरूरी होता है टू बी इन हिज डिग्निटी और टू गो समवेयर. एक्चुअली द मेन कंसेप्ट ऑफ पोएट वाज हंगर. उसकी सारी पोएट्री अगर आप ध्यान से देखते हो, ये गो फॉर अ हंगर. डेफिनेटली आपने हंगर उसकी पोएट्री पढ़ी होगी. वन ऑफ द बेस्ट पोएट जयंत महापात्रा. एंड द सेकंड वन द ग्रैंडफादर. मेन इशू पॉवर्टी और हंगर ही है. अगर आप जयंत महापात्रा की पोएट्री को लोड करते हो तो पूरी पोएट्रीज में मैक्सिमम अटेंशन वो ओडिशा को देता है, वो उस चीज को डिफाइन करता है. एंड देन वी हैव नो अनइजी स्फीयर ऑफ क्लाउड darken the white skies of your day, the silence of the dust gazes the long afternoon sun ruling the cracked fellow earth, ate into the laughter of your flesh, the laughter of your flesh. Now come back to the basic discussion that I want you guys to work out. ये प्लीज आप लोग लिख लेंगे. Sorry. The point is a biographical perspective faced with the hunger in 1866 Odisha. Famine and the poet's grandfather, a Hindu, had to choose between his dignity of the dying in one's faith and indignity of betraying it living. He can entered orally converted to Christianity. सर यहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे, खाने को कुछ नहीं था. अब उनके पास सिर्फ एक थी, to live the life or to ट्रांसफर और माइग्रेट. ओ सर अपने आप को क्या करना? बदल देना, हिंदू से क्रिश्चियन में चले जाना. सर ये क्या था? What is this? This tells about the helplessness of a man. एक आदमी कितना हेल्पलेस है that he had to change his own religion. Then the diary of grandfather, it do have the certain thing. The first two paragraphs जो हमने अभी रीड किए, it tells about the mental agony. So the mental agony जहां पे आदमी लड़ रहा है, that for his identity, that is he was dying for his own identity, because in this paragraph, listen to this paragraph, ये बताता है कि एक आदमी अपनी आइडेंटिटी किस हद तक लड़ सकता है. For you it was the hardest question of all. Dead, empty trees stood by dragging river, past your weakened body falling against your sleep. You ought to wake, the jackals move. To move means you don't have any flesh on your body. It's a hungry body that is being lying everywhere. There's no water in the river. There are no leaves on the trees. So you can imagine the poverty and state. Did you hear the young lamb roos or rusted? The cold mean night of the valley. Did you see your own death? Watch, I repeat, watch it tear your cries. Break into them into unnatural laughter. The unnatural laughter, the people get crazy. Crazy because they have nothing to eat. How would they survive? And here says, get the circumstances of people at that famine
ये मेंशन कर रहा है सर्कमस्टेंसेस के, लोग कैसे जी रहे थे, हाउ दे हैव बीन लिविंग देयर लाइफ and what are the things that they need to keep in mind. I repeat, how old were you? Haunted, you turned coward and run, a real animal and you plugging through your bond, you left your family behind, the bullet things, the precious gold that praise the quality of God. The next paragraph is one most moment, and please guys check it out, this one. The imperishable that swung by broken body, turned into inside out. What did fate matter? What? I repeat, what Hindu words so ancient were true for whole, uneasy you dream towards the center of your web. Yeah, it all been the oldest religion in the world, the Hinduism. But वो Hinduism क्या करेगा जब खाने को कुछ नहीं हुआ? You don't have anything to eat. How do you survive? What about the religion when I don't have anything to eat? If really I want to survive, I want to live, I have to turn, I have to change my own religion. This all being mentioned in the diary of grandfather, जिसको पढ़ रहा है, and then come up to the next paragraph, that is the really dominant one, जहां एक एक चीज को highlight करता है, and he says everything about the real situations. The imperishable strength your broken body turned it inside it. इसको दोबारा पढ़ेंगे. What did the fate matter? What Hindu word be ancient to true for you hold, uneasy and dream towards the center of the web. The separate life yet you survive. The separate life that you survive, while perhaps the one you left wept in a blur of your heart. Now in a night to sleep and taunting praying, my son, and I speak to the feminine nameless as snow. Sir, यहाँ पे circumstances of people at the time of famine, effects of hunger, how hopeless the people are being living their life. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे जो पोएट के ग्रैंडफादर ने वहां पे डायरी में लिखा, is religion is more important, really is religion is more important than hunger? Question mark. You guys need to work out through this phase of grandfather. And then come on next one. A conscience is here between us, he is young, the words of glory and breaking down to him before. He is young, exactly, he is young. The father of the narrator is young, and he was somewhere being concerned with the certain things. Does he think of the past as those we have lived? Yawn out of silence, we look back now at what we do not know. कई चीजें हमें नहीं पता थी, रियली हमें आइडिया भी नहीं था, तो सब रिवील कर रहा है थ्रू द डायरी ऑफ हिज ग्रैंडफादर. देयर इज अ डाउन वेटिंग बिसाइड अस whose signs are 100 years old from grandfather. You are invisible piece of the board whose, I repeat, whose move one has made the children grow now to know us. क्योंकि बच्चे यही जानेंगे, बेसिकली हमने अपने रिलीजन को बदल दिया. they been going to know by the new religion, by the Christianity, but we are Hindu by the birth, and that was being passed out. And how did he get to know? While he was reading the diary of his own grandfather, crying as deep where our voice lapsed into silence. We wish we knew you more. We wish we knew what it was against dying to know our dignity. There was a question. What is important, to dying or to know your dignity? The last paragraph says everything that was required to know, that had to earn dangerously. Your last chance was blindly terrifying, so unfair. We wished we had not wake up with a smiles in the middle of some social order. Sir, अगर आपको इस पूरी पोएट्री को सम अप करना हो, इस पूरी पोएट्री को समझना हो, तो पूरी पोएट्री मैसेज देती है, बायोग्राफिकल मैसेज देती है, जो डिटेल बताती है circumstances that how the narrator grandfather, the poet grandfather, has spent his life. What was the circumstances at the time of 1866 famine in Odisha, and the hunger was at what state? लोग कैसे प्रिवील कर रहे, कैसे समझ पा रहे थे? अब इस पोएट्री को सम अप करना हो तो जयंत महापात्रा had really shown the real poverty, the real hunger in a poetry. The grandfather, we have pointed out to each and every important details. क्या है, कौन सी चीजें जो दिमाग में रखनी चाहिए, कैसे उनको डील करेगा, किन चीजों समझने की कोशिश कर रहा है, और उस मैसेज में, उस डायरी के अंदर ग्रैंडफादर ने लाइफ के कौन से पार्ट डिफाइन किए जिनको पढ़ के नरेटर लगता है दैट इट वाज सो बैड, because at that particular moment it was important to change the religion if really you want to survive. नहीं तो बोन सीधी खाली, फ्रेश तो था ही नहीं. The hunger was everywhere. Have you seen the poetry? The trees have no leaves, yeah, the river have no water, and that makes a complete
state of hunger in the poetry The Grandfather. होपफुली इस पोएट्री के कुछ बेसिस आपको समझ में आएंगे। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट थिंग आप इन डिटेल्स को अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे दैट विल बेटर पास, स्क्रीनशॉट लेके इजीली लिख पाए एंड देन रीड आउट द पोएट्री बाय योर ओन। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन या किसी तरह की रिक्वेस्ट हो कि सर ये चीज यहाँ पे ऐसे नहीं या ये वाली पोएट्री की डिटेल आप दे, कमेंट बॉक्स में आप आके कमेंट दे सकते हैं। फॉर मोर कीप वॉच, क्योंकि यहाँ पे देखने से सब कुछ क्लियर हो जाता है अगर आपको ऐसा लगता है तो। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कैच यू गाइस सून विद अ न्यू वीडियो। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। So now it's time for you to work. All the best.